So good. I hope all of you guys are doing great today. Me, yani Shivam, Defense Exam Master, I'm live with Major Arun Shreedharan sir. Arun sir has been a very dear senior, guys, and a techie from the same branch of mine, mechanical engineer, SS90 OTA, and sir is the second officer from OTA who is from the tech. तो हम आज बात करने वाले हैं सर से कि एक टेक्निकल ऑफिसर होता क्या है. You are the first guy from the mechanical, sir. Very welcome to this amazing session or podcast of mine, जहाँ पे हम अपने उन सीनियर्स को लाते हैं जो फौज में रहे हैं, जिनकी जर्नी बहुत अमेजिंग रही है, एंड देन उनसे फिर बच्चों को इंस्पिरेशन मिलती है. तो सर, एज यू हैव बीन अ टेक्निकल ऑफिसर, आपका ड्रोन्स में इंटरेस्ट है, लाइक मी, आई एम लाइक गाय हु इज क्रेजी फॉर फ्लाइंग एंड ड्रोन्स एंड ऑल. और आप बहुत ज्यादा प्रमोट भी करते हो मॉडर्नाइजेशन को और इस चीज को लेके ना, मेक इन इंडिया टाइप्स जो चीजें हैं. तो मैं ये जानना चाहूंगा कि हाउ डिड योर जर्नी स्टार्टेड सर. आपके दिमाग में कब आया ये थॉट कि यार मेरे को आर्मी ज्वाइन करनी है. हाउ डिड इट स्टार्टेड? Awesome, man. I mean, first of all, thank you. Giving me an opportunity to come to a podcast, and this is the first thing. I'm doing it for first time. ठीक है, पहली बार कर रहा हूँ. ठीक है, तो कहाँ देखना है, कहाँ नहीं देखना है, वो सब गाइड करना है. Okay, you're gonna be my mentor into this, right? So, Shiv, how would I address you? You should be addressed as Shivam, right? Yes. Okay, great. So when you reached out to me, तो मैं थोड़ा camera shy and all those things are there. Okay, although I want to get into a lot of things and inspire youngsters like you, and your story is also inspirational. But again, this is basically let's okay, nervousness, we call it nervousness. Okay, right, camera nervousness. Let's start. So your question is, how did I start my journey, correct? Yes, sir. I'm an average guy. Okay, average kid. Nothing substantial. कहीं पे भी नहीं दिखता है. या स्कूल कैप्टन हो, या what do you say, स्कूल लीडर हो, या प्रीफेक्ट हो, कुछ भी नहीं. ठीक है, एवरेज गाय. अपना क्लासेस, अपना खेल, वीडियो गेम्स, बेसिक जो भी चीजें उस टाइम पे लोग करते थे, वही किया है. आई एम फ्रॉम केरला. आई एम अ नेटिव ऑफ केरला, एंड केरला में ज्यादातर फौजी, आई हैव नॉट मेट. I think percentage compared to induction of people into forces from Kerala is much smaller compared to northern states. So as a engineering भी मेरा पहला choice नहीं था. So but I got into engineering. Of course mechanical के अलावा कोई और stream तो बनता ही नहीं है. ठीक है, there is no other stream which is better than mechanical. I'm being partial now. So mechanical engineering में we did my 4 years. And वही सेम रूट जैसे कि जॉब लगो है ना. You get into a campus placement. I got into a campus placement in third year itself, to a very famous company called Satyam Computers. डूब गया. Right. Okay, by the time I got out of college, डूब गया company, right? So what a great start, no? So because since I got into Satyam Computers, I did not join anywhere. I did not apply for any other campus selections and all those things. I mean, incidentally I saw at a party, एक reunion चल रहा था, तो वहां पे एक आदमी खड़ा था. Okay, very he was giving a wonderful vibe about himself. There were a lot of people surrounding him, and तो मैं भी गया देखने के लिए, क्या है, कौन है यार ये आदमी. हाँ, तो वो बोल रहा था कि मैं ऐसा करता हूँ, वैसा करता हूँ, मैंने ये किया है, वो किया है. ठीक है, तो मैं एक आदमी से पूछा, भाई कौन है ये, क्या क्या बोल रहा है ये. तो वो फौजी है, कैप्टन साहब है वो. बोला अच्छा, फौज, कैप्टन, ठीक है, हाउ डू यू गेट इनटू दिस नाउ. That's my first instance of Forge. Okay, I have nobody in my family who's into Forge. I have no relatives who's into Forge other than some of my cousins. उनके relatives शायद होंगे. So I have heard less stories about it. So I applied. I got called for SSB Bangalore, 17 SSB Bangalore. गया,
पहले दिन प्रिलिमिनरी नहीं था, ठीक है, तो पहले दिन हम बैरक में चले गए रात को सोने के लिए, वाइट बेडशीट एंड एवरीथिंग, ठीक है, एकदम खटमल, बेड बग्स, ठीक है। 10 सवा 10 बजे उठ गया मैं बोला क्या है यार, व्हाट इज दिस नॉनसेंस, हाउ कैन यू सर्वाइव इन दिस शिट, यू कांट स्लीप, मतलब बेडशीट पूरा ब्लड ब्लड हो गया यार, अब क्या करें। तो नीचे सो गया मैं। अगले दिन सवेरे आके मैं बोला कि आई एम नॉट मेंट फॉर दिस, ठीक है। तो एंड आई मेड माई माइंड कि पहले दिन तो निकल जाएगा यार, अब क्या ही करना है ना। तो डिसाइड तो कर लिया, तो टेस्ट दे दिया मैं। अनफॉर्चुनेटली आई गॉट सेलेक्टेड, ओके। एंड देन 5 दिन और रहना पड़ा उधर, ठीक है, ऑल दिस टेस्ट एंड एवरीथिंग, एंड देन अगेन गॉट सेलेक्टेड, ठीक है, विच आई डिडंट वांट टू, बिकॉज मैं सो ही नहीं पा रहा था इतने 5 दिन से। गॉट सेलेक्टेड एंड देन यू नो आई cleared medicals also, went into OTA as SSC Tech. वहां पे भी बहुत रगड़ा मिला, ठीक है, पीपल यूज्ड टू कॉल मी ब्रोंको। वो स्टोरी कभी और दिन बताऊंगा। एंड देन गॉट इनटू इन्फेंट्री व्हिच आई डिडंट वांट टू अगेन। आई वांटेड टू गेट इनटू इंजीनियर्स एंड ऑल दोस थिंग्स, सो दैट बिकॉज टेक्निकल नॉलेज कहीं यूज हो जाए करके। Did my 10 years of service, did a lot of infantry stuff that we used to do, a lot of operations, a lot of basic stuff that an infantryman gets to do, and I've been lucky to be part of my parent unit being an amazing 224 25 years old unit, my deputation unit again being a very very amazing unit in Assam Rifles, um, as a brigade, in a brigade as a G2, one of the most you know gallant brigades also. And I have been lucky to serve and have to uh, to rub shoulders with one of the greatest seniors, the greatest coastmates, juniors, jawans, all the ranks, who have have met exceptional people with exceptional courage. तो उनके सामने ये सब देख के ही हमें लगता है कि यार ये तो तुम्हारा जिंदगी तो एकदम लकी है, हाँ। And then I got into technical. Once I went out, I went into drone technology. Again, I've been blessed with to work with some amazing companies. I've seen some amazing entrepreneurs, innovators, who can just make stuff like this. Okay, so drones में रहा, past 2.5 years I've worked extensively in drones. So that's it. That's all my journey is. I have a wife and I have a son who's 8 years old. 9 years he's going to be. So that's it. Yeah, चल रहा है. I think you're mute. या सॉरी। सो मैंने आपको बीच में रोका नहीं, बिकॉज अभी तक तो मैं 4-5 क्वेश्चन शूट कर चुका होता था। Shoot करो, shoot करो. Yes. So because the journey is so phenomenal, sir, and then मेरा भी I wanted to become a pilot. I couldn't make the cut into the Air Force. फिर I tried for the army entries. I cleared 5 CDS, 8 AFCAT, पेपर देता गया, मौके बनाता Oh गया। my God. You already know the journey, sir. And then जब हम connect हुए थे, कि I asked you कि sir drones के साथ आपका क्या relation है? And then I am a drone guy. I am a certified drone Absolutely. pilot as well. तो फिर ना So वो you're a pilot already. yes, I am a drone pilot. Yes. Perfect, perfect. तो वाइब मिल जाती है ना अपनी वाइब, एंड वी आर फ्रॉम मैक, तो मैकेनिकल सुप्रीमेसी रहती है हमेशा से ना। Absolutely, absolutely, always. दैट डजंट गो Yeah, एनी टाइम। सो true, यहाँ true. पे मैं थोड़ा सा आई वुड लाइक टू गो डीप डाउन कि एसएसबी की जर्नी के बारे में पूछते हैं। बच्चे बहुत सारे होते हैं कि सर आपके साथ बहुत सारे ऑफिसर्स आते हैं, बहुत सारे हमारे सीनियर्स आते हैं, एसएसबी एक्सपीरियंस कैसा था? यू वेंट टू 17 एसएसबी बैंगलोर, तो हाउ वाज योर एसएसबी? मतलब इट वाज अ स्मूथ जर्नी या आपको कोई ब्लॉगर आया? नहीं, कहीं कभी नहीं, मैं तो सेलेक्ट ही नहीं होना चाहता था यार, मतलब सोने को नहीं मिलता था अगले पूरे 5 दिन, ठीक है। मैं सोचा कि मतलब कहाँ फंस गया मैं, और जो बाकी सारे योर पीपल एंड ऑल वेर सो व्हाट डू से प्रिपेयर्ड एंड कि एकदम पूरा फोकस एंड ध्यान एंड एवरीथिंग, एंड आई वाज लाइक कि मेरे को तो पता ही नहीं है कि करना क्या है यार, है ना। सो आई हैव अ वेरी डियर फ्रेंड कॉल्ड प्रणय, ठीक है, प्रणय विश्वकर्मा, ठीक है, he's a very close friend till now. So he was my SSB mate, मतलब वो बताता था कि मुझे करना क्या है,
ये करो वो करो ये करो. Unfortunately he was supposed to be selected. I mean, I wish he should have been in the force, because I have not seen such an inspirational guy. I have not seen somebody who's in so much love with forces. uh, but मैं हुआ, and he had to continue with his career outside, which is amazingly going okay. So I always say that कि तेरा सही चला कि मैं इधर और वो है. That kind of, we used to joke around. So he lives in Pune. Yes. So SSB was after difficult. और मैं कभी सेलेक्ट नहीं होना चाहता था. तो फिर हो कैसे सर, हुए कैसे फिर आप? एब्सोल्युटली. मतलब कि सेलेक्ट इसलिए हुआ शायद. आई थिंक देर आर टू ways to do a job. One is you become extremely amazing at it. One, you are so relaxed that you're not concerned about what is the outcome. Right, exactly. And you give it fully. अब मेरे को जब thematic appreciation test या what is that called, picture appreciation test and all those things, no, Yes. PP and all those things, हाँ. जब वो चल रहा था तो I was not concerned कि मेरा सिलेक्शन होना है. I was only concerned कि ये क्वेश्चन का जवाब क्या हो सकता है. Right. So I think that is one of the might be one of the reasons that, or ये experience मुझे मिलना चाहिए था. That is in my destiny, that I have to suffer and learn those experiences over the years of 10 years to get where I should be. So that might be one of the reasons also. And I believe a lot goes to my parents and teachers, who I think there was a lot of subconscious learning. ठीक है, अंग्रेजी अंग्रेजी बोलता नहीं था मैं, तो आता भी नहीं था. ठीक है, अब इंजीनियरिंग कॉलेज में गर्लफ्रेंड मिला तो तब जाके थोड़ा बहुत अंग्रेजी, है ना, टू इम्प्रेस हर हु इज माय वाइफ नाउ. तो so that kind of scenario. And I believe that there's again an English teacher called Lalita ma'am. So she was fraternity in the sense her father was into forces and all. So somehow she being in the 70s and 80s, uh, going through that forces, I was just talking to her a couple of days back. So she was somehow able to subconsciously train me into uh, saying the right things or being in the right mindsets वगैरह. I think that might be one of the reasons, but I have no clue, man. No clue. So जैसा कि आपकी आंसर से it is clearly evident कि you was not focused upon the result, you was basically process focused, and My guess. you was relaxed, that is why you got selected. And sir जब I wanted to get out. मुझे सोना था. I wanted to eat food from house. सर आपकी ना ये चीज सुन के ना मेरे को भी एक इंसिडेंट याद आ गया. आई यूज्ड टू गो टू मतलब एसएसबी, मेरा 9th अटेम्प्ट चल रहा था. दैट वाज इन द 9th अटेम्प्ट, आई वाज इन गांधीनगर 3 एफएसबी. आई Okay. वाज Persistence, man. Persistence. यस परसिस्टेंस है, परसिस्टेंट तो बहुत था मैं, मतलब जाने के लिए आई वाज क्रेजी. तो I know. इतना मतलब था कि मेरे को, आई वाज अ वर्किंग गाय, आई वाज इन कॉर्पोरेट ऑलरेडी, है ना, यू नो, अराउंड 6 साल का एक्सपीरियंस है, 6 साढ़े 6 साल का. तो मैं वर्किंग था. तो एसएसबी वाज लाइक अ हॉलीडे फॉर मी, कि यार एक हफ्ते से ब्रेक है, अब जाएंगे एसएसबी में, जो होगा देखेंगे, वी विल गिव आवर बेस्ट शॉट, दिन में सोएंगे, क्योंकि सर यू नो टेस्टिंग वगैरह 12 बजे तक खत्म हो जाती है मोस्टली, यू गॉट द होल डे स्लीप. तो दे पीपल यूज्ड टू कॉल मी स्लीपी शिवम. Oh, nice. SS. Yes, Short service, short sleepy service. Shiva. They used Right. to call me, all of my SSB mates, many are serving, many are doing wonderfully great outside. They used to call me Yeah. शिवम. शिवम आएगा, असेसमेंट देगा, साइक टेस्ट करके Yeah. आएगा, इंटरव्यू से Yeah. आएगा, जीटीओ से आएगा, सो जाएगा, फिर वो शाम को Yeah. उठेगा, गेम खेलने होंगे. They used to call me Yeah. शिवम, प्लीज कम हियर. मतलब इतना Yeah. मजाक बनाते थे, बिकॉज सर आई यूज्ड टू स्लीप. मैंने कहा यार कुछ मिले ना मिले, नींद पूरी Yeah. कर, नींद पूरी करना Yeah. बहुत जरूरी है. क्योंकि फिर रात को Yeah. ये लोग, दे पीपल यूज्ड टू वेक अप 12 बजे तक, 1 बजे तक बैट्स पे बैठे हैं 10-12 बंदे, और दे आर डूइंग ऑल लॉट ऑफ लाइक डिस्कशंस अराउंड द वर्ल्ड, कुछ भी डिस्कशन चल रहा है. तो मैं दिन में सो रहा था सर. तो दैट वाज अ लॉट ऑफ अ जर्नी देयर. तो SSB teaches me a lot, like it taught me a lot, it made me a better man, better human. Impressive, because you have you told me that you have there around 40 odd people are already
into academy and serving and all because of your training and everything. That is incredible. That's what a percentage, man. And 5 CDS, 8 AFCATs, 11 SSB. That is true persistence. Okay, people to matlab how much learning have you had then? है ना, इतना सारा knowledge, इतना सारा effort. Incredible. That's so नाइस ऑफ यू सर, थैंक यू सो मच सर। बस वो था कि करना है Incredible, man. एक अगेंस्ट ऑल ऑड्स, बिकॉज वी आर फ्रॉम इंजीनियरिंग ना, तो इंजीनियरिंग वाले कभी ना नो नहीं लेते, दे नेवर टेक नो फॉर एन Absolutely. आंसर। करना है तो करना है, Absolutely. विल डू इट एनी। Absolutely. सर मैं For आगे all आप, the ages out there. बस आगे एक सवाल आता है मेरे मन में, लाइक एसएसबी हो गया, एंड देन यू बिकम अ टेक ऑफ्स, यू ज्वाइन इन टेक। तो थोड़ा सा सर एक सवाल है जो कि मेजरली बच्चे पूछते हैं कि टेक्निकल ऑफिसर्स जो होते हैं, they get an antidote seniority, basically they got an antidote seniority 1 year or 2 year। थोड़ा सा आप उसके बारे में कुछ बताओगे कि why technical officers are given seniority, इंजीनियरिंग वाले जो होते अच्छा, हैं। antedate seniority is basically to remunerate people who have done engineering, है ना? तो 4 साल की इंजीनियरिंग करके दे आर कमिंग टू स्टेज, लेट्स से 17-18 में इंजीनियरिंग शुरू कर देगा, 4 साल, 22 सेलेक्ट होने में, 23-24 में सेलेक्ट हो गया, मान लो 24 में ऑफिसर बन गया, हम्म। करेक्ट? So his ability to serve till a lot many years and his promotional capability of becoming something, let's say for instance a general, that is always at loggerheads. मतलब वो अगर वो एनडीए के बराबर या यूएस एंट्री के बराबर आईएमएस से जो पास आउट होता है, उनके करियर ग्राफ देखोगे तो वो वहां पे नहीं, वो उस मुकाम तक पहुंच नहीं पाते. So it was given that they will get a 2 years of antedate seniority to push them to that level of seniority, and so that they are equally competent. Indian Army is I mean the whole defense force is a merit based system, राइट। है ना? तो मेरिट बेस्ड में भी इक्वालिटी होना पड़ेगा ना यार. तो अगर विमेन ऑफिसर्स को अपॉर्चुनिटी नहीं दोगे कि उनको प्रूव करने का, सो हाउ डू यू से दैट दे आर गुड और बैड? You understand? So it's the same thing. So antedate seniority is also antedate seniority. So you give them. I got a 2 years antedate seniority. So if I was serving, I would have been a lieutenant colonel in 2022, and my course-mates who did not have an antedate seniority would have been a lieutenant colonel in 2024. मतलब है ना, that time scale, I mean the time bound promotions and all those things. राइट। So that means I get 2 years extra to prove myself to come up to that level. Ki, okay, maybe I can become a colonel, maybe I can become a brigadier, maybe I can become a general and all those things. So that is basically, I feel the antedate seniority has a ability of giving them equal opportunity for engineers who have come and done their 4 years of engineering outside. लॉर्ड्स, द लॉर्ड्स। That yeah, the crazy guys, है ना? या ठीक है, इतने थप्पड़ खाए होंगे कि मतलब पता नहीं चलेगा. I got in a day 28 slaps because of ragging. तो हम लोग एक साल, मतलब मैकेनिकल इंजीनियर्स नो, वी आर लाइक एक साल प्रोटेक्टेड थे, तो अगले साल कोई रैगिंग नहीं करेगा क्योंकि सीनियर बन जाएगा. तो जिस दिन सीनियर बनने थे उसके एक दिन पहले बुला लिया गया हमें बाहर, बोला आ जाओ तुम लोग बच्चों, ठीक है तुम्हारी रैगिंग होगी अब. ठीक है, और 28 थप्पड़ मिले मेरे को. ठीक है, आई वाज लाइक दाने दाने आ गए थे यहाँ पे. आई वाज लाइक व्हाट क्रेजी मैन. एंड यू डोंट गेट worried then, you get worried when your friend is getting beaten up. उसको जब थप्पड़ मिलता है ना तब लगता है कि, तो आई थिंक every incident that has happened to me has paved my way into becoming a Fauji, राइट। है ना? तो all these incidents have somehow molded me. नहीं तो मैं कहाँ एवरेज आदमी यार फौज में मेजर, how is it even possible? Not possible. मतलब यू स्टिल डोंट बिलीव। No, I don't. I don't believe at all. मैं कभी कभी फोटो देख के देखता हूँ कि why would somebody select me? That kind of thing. लाइक Yeah. मतलब सम इंसिडेंट हैपेंड आपकी लाइफ की जर्नी में, कुछ चीजें ऐसी हुई जिसने आपको मतलब
indirectly propel कर दिया उस जर्नी में, and then you made out of a career out of it, sir. I think so because subconsciously I think I have been guided very well. Consciously मैं सोचता मेरा फोकस इधर उधर रहता है उस टाइम पे, तो I thought and I thought that's one turning point to get me into that picture where Forge taught me how to focus, and it was simple, but बहुत मेहनत है, but things became simpler. कि शिवम से बात करना है, how do you do it, how do you do a podcast? So we have a basic way of understanding and splitting that particular task into certain compartment to get it done. So that way I think 4G teachings can also be, I think that is what you're giving. Right. Your ability of 5 CDs, 8 AFCATs and 11 SSBs and getting these 40 people selected. ठीक है, इतना परसेंटेज तो मतलब रेगुलर एसएसबी सेंटर्स नहीं करते होंगे यार, है ना? दैट्स नॉट पॉसिबल. हाउ मेनी इयर्स हैव यू बीन स्टार्टिंग टू डू दिस? 4 इयर्स, 5 इयर्स? 2020 3 साल में 40, मतलब ठीक है, साल में है ना 10 से ज्यादा हो गया ना यार. राइट. तो दैट्स अमेजिंग परसेंटेज. नहीं होता sir. I'm doing I just do my bit for the country. That's what. So that is what. So your destiny, I think, if you had been an officer, you would have been an officer only for yourself. Now you are a mentor and a guiding light to these 40 people, and maybe more, maybe 100, maybe 200 coming future. So I think that's a larger part of the destiny. So it's always about what you do. सर सिलसिला जारी रहेगा जब तक जान है. बढ़िया है. तो लाइक सर थोड़ा सा रहा है मेरा, लाइक वो इनबॉर्न है, थोड़ा सा जिद्दी हूँ काइंड ऑफ, कि यार जो चीज चाहिए, एंड देन इट हैपेंड इन अ लॉट मेनी वेज. आई गॉट मैरिड लास्ट ईयर. आई मैरिड माय ओन गर्लफ्रेंड. तो किसी और का तो करना ही नहीं चाहिए यार, थप्पड़ मिलेंगे. ठीक है. we basically dated for 6 years plus, and then oh my god, amazing. So it was a hell lot of a journey to convince both of our parents and then get married. So it's been a year since we got married, we got settled, we got our own house in Delhi. Amazing. बहुत मतलब बच्चे आते हैं ना मेरे पास कि सर मेरा ब्रेकअप हो चुका है, सर मेरे से तो रिलेशनशिप की वजह से मेरी वॉट लगी हुई है. तो मैंने कहा, मेरे एक बार को तो हंसी आती है, मैंने कहा यार क्या खुद तो डाउट्स लेके आ रहे हो. मैंने कहा टैकल इट यार, टैकल इट, बिकॉज if you have taken a decision, I think you should stick to it, because आपने वो consciously के लिया होगा. और अगर problems है तो मेरे हिसाब से जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ सॉल्यूशन भी है, सॉल्व कर लेना चाहिए. Absolutely. मेंटल पीस इज वेरी मच रिक्वायर्ड, बिकॉज हमारी जर्नी मोस्टली सेम ही रही है. एंड लव स्टोरी के बारे में भी मैं चाहूंगा, पर उसके पहले मैं एक चीज पूछना चाहूंगा सर. यू जॉइंड ओटीए. सर ओटीए में कितने मजे आए, मतलब हाउ वाज द ओटीए लाइफ? मतलब शौक लगा थोड़ा ओटीए जाके, यार ये क्या हो गया? शौक क्या लगा यार, लोग मेरे को ब्रोंको बुलाते हैं. ठीक है, सो देयर इज अ स्टोरी टू इट. ठीक है, बहुत रगड़ा खाया एंड बहुत मतलब श्याम भी मारा मैं, बहुत श्याम मारा. श्याम का तो मालिक था मैं. ठीक है, कुछ नहीं करता था मैं. ठीक है, ड्रिल करना हो नहीं करूंगा. ठीक है, रगड़ा खाना है वो भी नहीं करूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा. ठीक है, थप्पड़ खाया बहुत. ठीक है, आई यूज्ड टू हैव अ अमेजिंग कंपनी कमांडर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, कोको जो हम बुलाते हैं. तो सो सर वाज लाइक तो कुछ भी नहीं कर सकता तो एटलीस्ट ठीक है टेक्निकली कुछ बना तो दे. So that was my journey. I have very dear brothers who are still serving. तो रात को कॉल करके 10 बजे, या म्यूट, रात को 10 बजे कॉल करके ए ब्रोंको क्या कर रहा है तू? So that kind of scenario is there. सर एक चीज आती है मेरे दिमाग में ना, लाइक ये बच्चे जाएंगे, लाइक दिस गाइस विल एंड अप इन ओटीए. तो ओटीए में ट्रेनिंग आईएमए से शॉर्ट होती है, मतलब कम टाइम में हो जाती है, 11 मंथ्स का ट्रेनिंग है बस. एंड देन पीपल गॉट कमीशन्ड अर्ली. तो ओडी की ट्रेनिंग उस तरीके से थोड़ी सी टफ मानी जाती है आईएमए के मुकाबले या एनडी के मुकाबले ना. यू कांट कंपेयर. तो एनडीए का है, आईएमए का है, ओटीए का है. दे सर्व ऑल डिफरेंट पर्पसेस. ठीक है. जनरली when this was conceptualized, तो पहले शॉर्ट सर्विस 5 साल के हुआ करते थे.
ठीक है, people used to do one field, one piece, and then they were ready to go into the corporate to do their leadership life and all those things. तो 5 साल में जो lot of manpower issues and all those things have come, people have identified कि 5 साल short service will not do the work. ठीक है, you need a set of people who are driven to augment the existing NDA, existing IMA, that manpower, right? So that is when OTA, technical, OTA, non-technical, which all have come down to from, I think from SS87 it has started to become 10 years. So 10 years is a very formidable force. But the only issue is 10 years mein you get a lot of information, you know exactly how things work, and then when you're going, you're kind of stuck कि अच्छा अब मैं corporate में क्या करूंगा, where do we get उसके अलावा. So for that we have placement programs and all those things which guides people like us to secure a good career outside. But it is an anxiety cause and all those things also. Okay, so 10 years is a good concept for having a chunk of a force ready to be at utilization at every physical space. Right, sir. So amazing journey, sir, indeed. मतलब amazing तो नहीं है यार. You used to you are क्या बोलते हैं, you are interviewing legends and I'm here an average man attending your ठीक है podcast, so that thanks to you actually. सर सब एक से बढ़ के एक है सर. No comparison among each senior from the forge is a different. I believe so. Absolutely, you're right on point. I think Shivam's journey cannot be compared with me. My journey cannot be compared with anybody else. What we can do is how much value we can add to the society. Exactly. This is okay. You add a lot of value by helping youngsters get the guide, be a guide to them, be a guiding light to them. And I add value by talking about drone technology, talking about indigenization, talking about startups, talking about good companies. So that's what I want to do basically. Yes, so there is a drone वाले पे सर we will do a separate podcast क्योंकि फिर वहां पे Absolutely. क्यूरियोसिटी थोड़ी सी ज्यादा है उस चीज को लेके because absolutely. तो उसके बारे में भी जानेंगे and then that is a job of the future as well. तो यंगस्टर्स को बताना बहुत ज्यादा जरूरी है उसके बारे में. Absolutely, and you need to have a technical savvy force. Right. ठीक है, अब ये यंगस्टर से ही हो पाएगा. बिल्कुल सर. ठीक है, आप जो फौज ज्वाइन करने से पहले उनको ये सब पता होना चाहिए कि ड्रोन क्या है, अनमैन्ड ग्राउंड सिस्टम्स क्या है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल क्या है, अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल क्या है, क्या कर सकते हैं, व्हाट इज द बेसिक रेडियो कम्युनिकेशन लिंक, हाउ डू यू ऑपरेट ऑल दिस थिंग्स, हाउ डज अ मेश नेटवर्क वर्क्स, ऑल दिस थिंग्स, रडार कैसे काम करता है या फाइटर जेट्स कैसे काम करता है, ये सब जानकारी एक दैट इज हाउ यू कैन फाइट इफेक्टिवली as a soldier when you know how to use your equipment. ये जो फोटोग्राफी में रॉबर्ट कापा and all these people, big हस्तियां जो है, नाम है, मैग्नम फोटोग्राफर्स, all these things, they say what you learn to use your equipment. मतलब कैमरा कैसे यूज कर सकते हैं, तभी तो आप अच्छा फोटो खींच सकते हैं. Right. Same way as a force, you should be able to know how to use your radio set, you should be able to know how to use your weapon, you should be able to know how to use your systems and drones and UAVs and everything. So that's very essential, and I think that's the value I'm going to try and push through you guys, है ना. इस पे एक पॉडकास्ट वो आप स्लॉट बुक कर लो मेरा. I don't. Absolutely, any time for you man, any time for you. वो मुझे चाहिए सर. और Absolutely. मैं भी I'm a guy like who is very crazy for flying and मैंने ड्रोन उड़ाना सीखा था like as a hobby. Then I got to like deeply घुसता चला गया. I bought a lot of drones and then आपसे कनेक्ट हुआ, सर ने बोला कि तू ये वाला इस वाले एयरक्राफ्ट पे करना है, इस वाले, तो वो अभी मैं उसमें घुस रहा हूँ. My end goal is Absolutely. to become a pilot. So you're already ठीक है. तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटी मिलेंगे आपको. आई थिंक जुड़ा रहना चाहिए हम दोनों को, एंड आई थिंक वी कैन ऐड बोथ वैल्यू टू द यंगस्टर्स in the spectrum, and let's do something amazing. Yes.
तो सर एक चीज और है जो मेरा मोस्टली आपसे एक क्वेश्चन रहेगा, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, है ना? ओके। क्योंकि हम लोग अब फ्रीक्वेंटली पॉडकास्ट करते रहेंगे अलग अलग टॉपिक्स पे, है ना? एब्सोल्युटली ब्रदर, एब्सोल्युटली। तो दिस वाज अ इंट्रोडक्टरी पॉडकास्ट, एंड देन मैं चाहूंगा जो भी बच्चे इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं या जो भी बच्चे इस पॉडकास्ट को देखेंगे जब ये एडिट हो जाएगा, तो उन बच्चों को मैं बोलूंगा कि इफ यू आर पैशनेट अबाउट समथिंग तो उस चीज के पीछे लग जाओ। वी हैव सीनियर्स लाइक अरुण सर, जिनको वी कैन लुक अप टू एंड देन वी कैन लर्न अ लॉट ऑफ स्टफ गाइस, है ना? तो उनको ना आप एज अ टेक्निकल ऑफिसर, ये बेसिकली इंजीनियर स्पेसिफिक होने वाला है, एज अ टेक गाय, एज अ टेक्निकल ऑफिसर। बच्चे आते हैं, वो मुंह उठा के चले जाते हैं सर एसएसबी में, वो टेक्निकल का उनको कुछ नहीं आता, बस उन्होंने किताबें पढ़ के डिग्री कर ली, बस काम खत्म। उनको आप एज अ टेक्निकल ऑफिसर क्या एडवाइस करोगे? यू हैव बीन अ टेक गाय, आपने फौज में, यू हैव प्लेड विद द लेटेस्ट ऑफ द टेक, कि क्या माइंडसेट लेके जाना है एसएसबी में भी या फौज के अंदर? व्हाट शुड बी माय? Absolutely. Yeah, there is no difference between a tech guy and a non-tech guy. At the end of the day, your outcome is war. ठीक है, you are supposed to win the war. You are supposed to fight. You are supposed to, your ability, आप कोई, वो कोई सर्विस वाला हो, वो कोई डॉक्टर एएमसी हो, कोई भी कोर हो, एट द एंड ऑफ द डे सबका अपना चार्टर ऑफ ड्यूटी है। ठीक है, टेक्निकल नॉन टेक्निकल इज एन एबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू इंडेक्स सर्टेन सेट ऑफ पीपल टू हैव दैट कैपेबिलिटी इंस्टॉल्ड, है ना? तो एक टेक्निकल ऑफिसर आ गया, एक इन्फेंट्री में लेट्स से देयर आर 4 टेक्निकल ऑफिसर्स, अभी कोई नया वेपन इंडेक्ट कर रहा है, तो इट विल बी इजी फॉर देम टू यूज दीस 4 guys टू गेट थिंग्स handed down to the rest of the jawans and people, correct? राइट, तो टेक्निकल नॉन टेक्निकल में कोई फर्क नहीं है, बिकॉज उनका एंड गेम इज ऑलवेज टू फाइट फॉर द नेशन, टू प्रोटेक्ट द नेशंस इंटेग्रिटी, उसके अलावा कुछ नहीं है। Some have greater responsibility. A non-technical will be looking after manpower much more. A technical will be looking after equipments and everything. So that kind of scenario, है ना? So what we should be able to guide is how can you basically understand the foundation of a particular system. आप सिखा रहे हो लोगों को सिलेक्ट होने के लिए, आप गाइडेंस दे रहे हो, इतना आपने, आपका जो ज्ञान है, एक्सपीरियंस है, उसका गाइडेंस दे रहे हो आप, and they're utilizing it and getting selected. Same way, technically, you should be able to understand what are all the weapons, what are all the products that is coming into. We have a very nice ecosystem now. Startup industries, defense industry has been opened up by the government, and there are so many people building so many amazing stuff. मगर इसको यूज करने के लिए कोई तो चाहिए, राइट, है ना? प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके वो you need to have an identification to see, okay, मैं ये long range weapon यहाँ यूज करूंगा या short range weapon यहाँ यूज करूंगा. That is called that the force will teach you. But to have an acumen, to have a technical capability to understand, okay, this is what we need, this is what we can use, is what we are going to build. यस सर। सो सर ने क्लियर कट आप लोगों को बताया है, जो भी बच्चे टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, अपना हथियार जो है आपका ब्रेन, यू हैव टू बी अवेयर कि यार वट एवर इज हैपनिंग अराउंड, वट एवर द वेपन्स आर गेटिंग इंडक्ट। सर मैं इनको बताता हूँ कि क्या वेपन सिस्टम्स आ रहे हैं अभी, इन द ड्रोन MQ-9 भी रीपर हम लेने वाले हैं यूएस से। Absolutely. उसकी Sky Guardian. I will make a dedicated video on that on my YouTube channel for the kids. So you Perfect. should know whatever is happening around. वो एग्जाम में भी आता है सर, एसएसबी में भी पूछा जाएगा इनसे। तो ये सारी चीजें आपको अपने अंदर लानी चाहिए। यू हैव टू बी एट द कटिंग एज ऑफ द टेक टू बिकम एन ऑफिसर Absolutely. 2023, एंड यू शुड, Absolutely. अगर आप ये करोगे तो यू विल बी अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द क्राउड। दिस इज व्हाट आई। True. True. तो सर Correct. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। Thank you very much. Yeah. Thank you. इतना टाइम देने के लिए रियली आई एम रियली हम्बल्ड, एंड यू आर जस्ट Yeah. और हम जुड़ते रहेंगे सर बार बार। देयर इज अ बिल्कुल लॉट भाई. ऑलवेज फ्रॉम यू। मेरे को काफी सारी चीजें आपसे सीखनी है अभी भी, टू बी ऑनेस्ट। Thank you so much. एंड So humble. ड्रोन टैक पे और इंडिजनाइजेशन पे, मेक इन इंडिया पे, स्टार्टअप इकोसिस्टम पे वी विल डू अगेन अ पॉडकास्ट फॉर द किड्स। Absolutely. We should. We should. इट वाज ऑनर टू होस्ट यू सर। ऑन बिहाफ ऑफ माय होल टीम आई वांट टू से थैंक्स टू यू, Thank एंड you so much. जय हिंद सर। Jai Hind bhai, thank you very much. You have been impressive. Amazing. Amazing to get to know you, brother. Okay. And any time, the doors are open anytime. So just give me a call for your boys and for your people and for your students. It's always a welcome. थैंक यू सर, मीन्स अ लॉट सर। Thank you. Thank you. Jai Hind, brother. Take care. Bye bye. Bye bye.